तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ये क्रिएटिव रियलाइजेशन शक्ति का उनका बुक है, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट में इन्होंने कहा है कि थैंक यू मैरिन एलन, ये अपना थैंक यू कर रहा है। इसके दो दोस्त हैं, डीन एंड मैरिन, फॉर योर लव, एंड उन्होंने सपोर्ट किया उनको उस राइटिंग बुक में इन ऑल अदर वेज में। थैंक यू रैम्बो भी एक, उसने ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप जो है उसने निभाई। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई मदर एलिजाबेथ, नाम है उसका, फॉर ऑल योर लव, विजडम एंड इंकरेजमेंट। मदर उसको दी, उसका थैंक यू कर रहा है। I would also like to thank all the incredible teachers who have contributed too much to my life and happiness, as well as to understanding that has been changed into this book. Some of you I have known as gurus. कुछ लोगों ने एज गुरु का रोल किया मेरी लाइफ में. Some I have known as personal friends and lovers, and others of you have come to me in the form of books. कुछ बुक के फॉर्म में आए. To all of you I send my love and deep appreciations. Last but not least, I would like to acknowledge and thank my own inner guide who keeps showing me the way, reminding me how to beautiful life easily really is, and who actually is responsible for writing this book. So, dear friends, I decided to write this book because it seemed like the best way I could think of the share with others the many wonderful things I have learned, which have to deepen and expanded my experience and enjoyment of the life. I do not consider myself by any means an expert on the art of creative realization. I am a student of the subject, and more I study and use the creative realization myself, the more I discover how vast and deep its potential is. Truly, it is creative as your own imagination. जितनी imagination होगी उतना उधर visual characterization थी चाहिए. This book is meant as the introduction and a workbook for the learning and using creative realization. Very little of the material is original to me. It is a synthesis of the most practical and useful ideas and techniques that I have learned in my personal study. My sources are many. I have included at the end a list of the recommended resources. मैंने आखिर में जो है resources that I think you will find interested and helpful. आपको interested और helpful मिलेगी वो list. So this book contains my different techniques. You will probably find that it works best not to try to absorb to all them at once, but more gradually. I suggest that you read the book slowly, trying some of the exercise as you go along. जब बुक पढ़ें तो एक्सरसाइज करते जाएं, ये लाजमी है. उसका सजेशन है शक्ति गौन का. गिविंग योर सेल्फ द चांस टू एब्जॉर्ब देम डीपली, आसानी से अपने अंदर को एब्जॉर्ब करें. ये शक्ति गौन की एडवाइस है. You might want to read at once through, then read it more slowly. एक दफ़ा पढ़ लिया उसको दोबारा पढ़ें, slowly पढ़ें. This book is my gift to you too. ये मेरा प्यार है जो मैं आपको दे रहा हूँ. Maybe it's a blessing to you. ये दुआएं हैं मेरी. May it help you. ये आपकी मदद करे. Bring more and more joy आपकी लाइफ में. Joy, satisfaction and beauty आपकी लाइफ में आ जाए. May it nurture the light that is shining within you. ये आपको लाइट की तरह उसको नर्चर करे जो आपके अंदर में. इंजॉय, लव, शक्ति की तरफ से प्यार, इंजॉय. अबाउट द आथर में दूसरा चैप्टर है अबाउट द आथर के बारे में. वो ये है कि शक्ति गवन जो है ना, बेस्ट सेलिंग आथर है. ये ऑफ क्रिएटिव रियलाइजेशंस का आथर है. वो है सोल्ड तकरीबन की 2 मिलियन 20 लाख कापीज जो है ना, वो फर्स्ट एडिशन में बिक गई थी. और दूसरी बुक है लिविंग द लाइट, रोशनी में रहो, गार्डन में वापस आ जाओ, द पाथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्रिएटिंग ट्रू प्रॉस्पेरिटी कैसे क्रिएट करते हैं. सेवरल अदर बुक्स भी हैं. अ वार्म आर्टिकुलेट इंस्पायरिंग टीचर जो है ये शक्ति लीड्स वर्कशॉप इनटू द, काफ़ी 20 ईयर्स से वर्कशॉप कर रहा है, काफ़ी कंट्रीज में इसने की. शी इज़ फैसिनेटिंग thousands of people in the learning to trust and act on their own inner truth, thus releasing and developing their creativity in every area of their lives. में आप अप्लाई करो क्रिएटिविटी, चाहे हेल्थ में हो, चाहे फिनेंशियल लाइफ हो, चाहे
एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे शक्ति एंड हस्बैंड जो है ना, उसका नाम जिम है। जिम मेक देयर होम इन, ये रहते हैं मिल वैली कैलिफोर्निया में, ऑन द आइलैंड ऑफ द आइलैंड पे रहते हैं। कोरन कैलिफोर्निया में एक वैली है, एक आइलैंड पे, उस पे रहते हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ। सो ये है शक्ति कौन के बारे में। ये सोर्सेज दिए हुए हैं, आप जो है ना चैप्टर रिस्कमेंडेड सोर्सेज जो है ना, आप उससे हेल्प ले सकते हो। और ये है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो है ये शक्ति कौन जो है वर्कशॉप भी करती है, और वर्कशॉप जो इसके होते हैं ये आप कर सकते हो ऑनलाइन। ये नंबर लिखा हुआ है इसका, इसको कॉल करो, वर्कशॉप डेट ले लो। इस बुक को पब्लिश किया है नटराज पब्लिशिंग, नटराज पब्लिश जो है ना इसको बुक किया है नटराज। तो ये तो हो गया इसका जो है ना, ये सारा पूरा हो गया चैप्टर जो पहला है। इसमें एक्नॉलेजमेंट होती है, प्रीशियस होता है, आथर क्वालिटी में होता है, और रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। सही है। तो अभी हम पार्ट 1 इसका पढ़ रहे हैं, शक्ति गौन का पार्ट 1। तो पार्ट 1 बेसिक ऑफ द क्रिएटिव रियलाइजेशन क्या है। तो इसमें ये जो है ना, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू यू, ये आपको डेडिकेट ये शक्ति गौन ने बोला है। तो हर मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो है ना, एक सेकंड हर मोमेंट इज डेफिनेटली क्रिएटिव होता है। द यूनिवर्स इज एंडलेसली वो बाउंडफुल होता है। जस्ट पुट अ फोर्थ क्लियर इनफ रिक्वेस्ट को भेजें। सही है। एंड एवरीथिंग योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स मस्ट कम टू यू, आपके पास जो चीज़ आप मांगोगे वो आ जाएगी। तो भी ये पहला चैप्टर है इसका पार्ट 1 का। ये व्हाट इज है क्या आखिर क्रिएटिव रियलाइजेशन, आखिर है क्या। क्रिएटिव रियलाइजेशन जो है ना, इज अ टेक्निक है ऑफ यूजिंग योर इमेजिनेशन टू क्रिएट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। जो आप इमेजिनेशन कर रहे हो उसको क्रिएट करो जो आप चाह रहे हो। देयर इज नथिंग एट ऑल न्यू, स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल अबाउट द क्रिएटिव रियलाइजेशन। यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट एवरी डे, आप यूज करते हो एवरी मिनट इन लाइफ फैक्ट। इट इज योर नेचुरल पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये आपकी पावर है। दिस बेसिक क्रिएटिव energy of the universe which you use constantly whether or not you are aware of it। आप वैसे यूज करते हो, आप अवेयर ऑफ नहीं हो। इन द पास्ट many of us have used our power of creativization in a relatively unconscious way से भी यूज करते हैं पास्ट में, because our own deep seated जो negative concept है about life we have automatically unconsciously expected and imaginated लेके आप में limitations हैं, difficulties हैं, problem to be our lot in life में काफ़ी है। To one degree or another that is what we have created for ourselves। हमने प्रॉब्लम क्रिएट की है, नेगेटिविटी हमने क्रिएट की हुई है। So this book is about learning to use our natural creative imagination in a more and more conscious way as you need to create what you truly want। आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, प्यार, फुलफिलमेंट, एंजॉयमेंट, लाइफ की सेटिस्फिकेशन, रिलेशनशिप, रिवार्डिंग वर्क, और कोई expression, health, beauty, prosperity, inner peace and harmony। What your heart desires जो आपका ये use of the creative realization gives us a key to tap into the natural goodness and bounty of life, वो आपको मिल जाएगी। So imagination is the ability to create an idea, a mental pictures, a feeling of sense of something। In creative realization you use your imagination to create a clear image, idea or feeling of something you wish to manifest। Then you continue to focus on the idea, feeling or picture regularly, giving it a positive energy until it becomes objective reality। आपको positive energy चाहिए तो reality में। In other words, until you actually achieve what you have been imagining, तो आपको जो imagine करे वो आपको मिल जाएगा। Your goal may be on any level, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो। यू माइट इमेजिन योर सेल्फ विद न्यू होम, कोई नई होम हो, नई जॉब हो, या कोई सर्टिफाइड रिलेशनशिप हो, या फीलिंग काम, सेरेनी, आपको काम रहना है, परहैप्स विद इम्प्रूव्ड मेमोरी करनी है, लर्निंग को एबिलिटी है। और यू माइट पिक्चर योर सेल्फ
हैंडलिंग अ डिफिकल्ट कोई सिचुएशन है उसको हैंडल करना effortlessly and simple. See yourself as a radiant being filled with light, love. You can work on any level and all we and will have result. फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे. तो ये है सही एक्सपीरियंस. यू विल फाइंड द पर्टिकुलर इमेजेस एंड यूनिक दैट बुक बेस्ट फॉर यू. तो इसलिए बुक आपके लिए बेस्ट है. लेट अस से फॉर एग्जांपल दैट यू आर फीलिंग अनसेटिस्फाइड इन योर करंट जॉब में. अगर अनसेटिस्फाइड जो है, इफ़ यू फील दैट जॉब इज बेसिकली राइट फॉर यू, आपके लिए बेसिकली राइट है फॉर यू दैट, बट देयर आर फैक्टर्स दैट नीड इम्प्रूवमेंट. आपको इम्प्रूवमेंट लानी है जॉब में. यू कुड बिगिन बाय इमेजिनिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट डिज़ायर. उसकी इम्प्रूवमेंट डिज़ायर मिलना है. इफ़ दैट डज वर्क काम नहीं करी, इफ़ यू फील दैट यू वुड प्रेफर अ न्यू जॉब, देन फोकस ऑन इमेजिनिंग योरसेल्फ इन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन दैट यू डिज़ायर. तो नई जॉब के लिए आप इमेजिनेशन करें. So either way the technique is basically the same technique है. After relaxing into a deep quiet meditating state of the mind, पहले माइंड को मेडिटेशन डीप क्वाइट मिलना है. फिर इमेजिन दैट यू आर वर्किंग इन योर आइडियल जॉब में आप काम कर रहे हैं सिचुएशन में. इमेजिन योर सेल्फ इन फिजिकल सेटिंग में आप काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में दैट यू लाइक. आप जो कर रहे हैं काम कर रहे हैं वहाँ पे दैट इंजॉय कर रहे हैं. फाइंडिंग सेटिस्फाइंग इंटरव्यूइंग पीपल से कर रहे हैं हार्मोनियस वे में, और रिसीविंग एप्रिसिएशन कर रहे हैं. अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल कंपनसेशन आपको मिल रही है. एड एनी अदर डिटेल दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू सच एज द आवर्स you work, an amount of the autonomy and the responsibilities you have, and so on. Try to get the feeling in yourself that this is possibly experience it that it were already happening, already हो गया. In short, imagine it exactly the way you like to do be as a it already आपकी लाइफ में already हो गया है. ये repeat this short simple exercise after perhaps twice a day. आपको डेली जो है ना दिन में 2 मरतबा करें. when you think about it, जब उसके बारे में सोचिए. If your desire and intention to make a change are clear है, आपकी desire, chances good है कि that you वो आप manifest कर पाओगे. सही है, क्लियरिटी होनी चाहिए. कहने का मतलब ये आपकी लाइफ में क्लियरिटी होनी चाहिए. सही है. So can become an experience and deep meaningful growth हो जाएगी उसमें आपकी. So in the process we often discover ways in which we have been holding ourselves back. हम पकड़ के रखते हैं नेगेटिविटी को, आपको ब्लॉक करते हैं. फिर हम अचीविंग सेटिस्फिकेशन एंड फुलफिलमेंट इन अवर लाइफ थ्रू हमारे अंदर में बहुत खौफ होता है, अनकॉन्शियस बिलीफ होते हैं. वन सीन क्लियरली दीज लिमिटिंग जो है ना एटीट्यूड्स कैन ऑफ्टन बी डिसॉल्व थ्रू द क्रिएटिव रिलेशन. डिसॉल्व हो जाएंगे प्रोसेस, leaving space for us to find and living a natural state of greater happiness, fulfillment and love. At first you may practice creative realization at a specific time पर करें, for a specific goal के लिए करें. As you more in the habit of using it, अब use करना शुरू हो जाएंगे, begin to trust the result it can bring you, you will find it that it becomes a integral part of your thinking. Trust का बन जाएगा. It becomes a continuous awareness में आ जाएगा. State of the consciousness in which you know that you are the constant creator of your life. आप creator बन गए हैं. So ये हो गया. अच्छा, ये चैप्टर पूरा हो गया, यहाँ हम बंद करते हैं. तो जस्ट दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे. वेल ये सिंपल एक्सरसाइज इन द क्रिएटिव रियलाइजेशन. पहले ये था कि क्रिएटिव रियलाइजेशन है क्या, अब पढ़ेंगे कौन सी सिंपल एक्सरसाइज है वो डेली दिन में 2 मरतबा करनी चाहिए.